इस बस्ती को उजाड़ने की बहुत ही घिनौनी साजिश की जा रही है। बाकायदा कानूनी रूप से ये जमीन इनकी है जो लोग यहाँ रह रहे हैं। उस सब के बावजूद हाईकोर्ट बिना सोचे समझे, बिना सारी चीजों को देखे फैसला देती है। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये लोग हैं। यहाँ पर 4,365 यहाँ पर घर हैं। अब देखते हैं कि कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कल क्या स्थिति होती है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पता लगेगी। मैं यही लोगों को कहूंगा भी कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है। So you heard that coming in from the petitioners as well. We have been speaking to a bunch of people. They have been saying that we have been staying and living on this land for the last several decades, and what is being done for the rehabilitation here. But the matter that has been, the railway land that is being claimed by the railways has been a matter of dispute in the court. Let's get you exactly when it comes to the history and the plea that has now been submitted in the Supreme Court challenging the Uttarakhand High Court order back in December 2022. The petitioners are lawful residents of the area, what is being said, but according to the High Court order, it is being said that there is no right and title vested with the encroachers. Let's get you what exactly is the plea that is being said in the Supreme Court challenging the petition, challenging the High Court order, saying that the ownership proceedings are still pending. The High Court order had clearly said that when it comes to the all lease deeds are in said to be violation of the regulations, because people there have been saying that we have the required documents to show that we have the ownership of the land. The area, Nazul land occupants have the lease. That has been the petitioner's side, they have been saying, which was challenged, where the High Court had said in Uttarakhand that the area in question of the property is of the railway. So there is no dispute when it comes to that 78 acres of land that belongs to the railways. The challenging the Uttarakhand High Court order in the Supreme Court, where they say that the residents' names are in municipal records as well. They have their required identity cards. They have been voting from the area, and they have also been filing the required property tax and other taxes as well. Even when it comes to the High Court order, they have been saying that discharging tax liability means nothing. You are doing your work as a normal citizen of the country there. But when it comes to the plea being challenged in the Supreme Court, saying that paying house tax regularly for years. So they have been saying we have the required documents and we are challenging the same, because when it comes to the ownership of the land, there are over 4,000 families there who are going to be affected and who are going to be displaced, despite you have the High Court order of 1 week prior notice, eviction notice, that is being given to those families. Let me straight away go across to Nilashish there. Nilashish, good morning. Important day in the Supreme Court. We are looking at multiple petitions there which have been challenging the Uttarakhand High Court order. Well, yes, absolutely. The Supreme Court will be looking into this particular batch of petitions which has in fact challenged the orders of the High Court, and it has stated that the orders were passed without giving an opportunity to the petitioners. Of course, in this situation, yesterday also Advocate Prashant Bhushan had mentioned this particular fresh plea that had challenged the order. But of course, the CJI tagged the matter and listed it along with all the other matters for today. Now, of course, it has been stated that the Uttarakhand High Court it had passed an order on the 1st of November, and as far as these approximately 4,000 families, more than 4,000 families are concerned, they had stated that the demolition of the structures must take place within a week. Now, of course, this has been said by the petitioners that... So today the Supreme Court is going to take up those important petitions. Nilashish, thank you for joining us with those updates. Even as the Supreme Court hears the Haldwani Pleas, politics, provocation and obfuscation dominates headlines. The idea of Muslim areas being targeted seems to be peddled freely time and again. और कल अगर देखा जाए तो एक डेलीगेशन थी, समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन, जो वहां भेजी गई थी हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में सीधे तौर पे लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि लोग वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम गिव अप नहीं करेंगे, ये हमारी जमीन है, हम कई दशकों से वहां रह रहे हैं और हमारे पूरे राइट बनते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जरूरी कागजात है, हम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, हम जितने रिक्वायर्ड टैक्सेस हैं हम उसे पे कर रहे हैं, और हम सीधे तौर पे जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर है हम उसे चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आज वही दिन है जब सुप्रीम कोर्ट विल बी टेकिंग अप द मैटर एंड विल बी हियरिंग द केस टुडे।
ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल राज्य सरकार ने अनदेखी अपने नागरिकों को भी करी और अपनी जमीन को भी खोने को तैयार है। रेलवे अतिक्रमणकारी है, इसमें मेरा आरोप है रेलवे पे। रेलवे अतिक्रमण करना चाह रही है राज्य सरकार की भूमि पे, और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बार बार गुहार करी गई, उनसे बोला गया, लेकिन कहीं जू नहीं रहेंगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो कहती सबका साथ सबका विकास है। विकास की बात तो हम बात करेंगे जब साथ देने का समय आया, तो आज ऐसी भयावह परिस्थिति आ गई कि 50,000 लोग सीधे सीधे प्रभावित होने वाले। इस बस्ती को उजाड़ने की बहुत ही घिनौनी साजिश की जा रही है। बाकायदा कानूनी रूप से ये जमीन इनकी है जो लोग यहाँ रह रहे हैं। उस सब के बावजूद हाईकोर्ट बिना सोचे समझे, बिना सारी चीजों को देखे फैसला देती है। अब देखते हैं कि कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कल क्या स्थिति होती है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पता लगेगी। मैं यही लोगों को कहूंगा भी कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है। Well, it's not just about the politics alone. Active attempts are also now being made to create law and order situation. The same pattern that was seen in Shaheen Bagh during the anti-CAA protest in Jahangirpuri during the drive against illegal construction is now being replicated in Haldwani. So from having women front to protest to making children participate to the might of a mob to send across a message to the court and the government and to the country as well that we will not budge come what may. अभी इसी जगह पे मकान आता है सर। ये रेलवे की जो डिमार्केशन है ये गलत किया जा रहा है हम लोगों के साथ। रेलवे को तो खुद नहीं पता है कि रेलवे की जमीन कितनी है। पहले गफूर बस्ती थी, गफूर बस्ती के बाद आज इतना बढ़ा दिया है, आज पूरा बनभूलपुरा जो है पूरा बनभूलपुरा को कवर कर दिया है। ऐसे करते करते तो सर पूरी आधी हल्द्वानी ही चली जाएगी। हमें यहाँ 20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई जो हम अपनी जमीन छोड़ कर यहाँ से जाएं। कभी हमारे सामने ऐसा मसला आया नहीं, और अब इतने बड़े हो गए ये मसला देखना पड़ रहा। हम नहीं चाहते कि हमारे घर जाए, यहाँ से मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हैं, इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कभी ऐसा हमारे सामने कभी हुआ ही नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो। अपना घर हम छोड़ के जाना नहीं चाहते यहाँ से। बात यह है कि ये घर हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे बेटी है, कमाने वाले कोई नहीं है। अब बताइए कहाँ जाएंगे? कर्जे में घर उधार बना लिए, कैसे निकलेंगे? 90 साल की हमारी उम्र हो गई, हमें मौत दे दो, हमें यही मौत दे दो, यही मर जाओ, अपने घरों में यही दफन कर दो। हम बीमार इंसान हैं, हमारे पास